But yesterday, morning, morning. Now, yesterday we have done one Rolle's theorem question. Can you remember? F of x equal to sin x minus sin 2x. Just let me go through that one. Anyhow, fx is continuous. You have taken that question. Fx we have written continuous on, I think, closed interval 0 to pi they have given. Am I correct? Now, next one, it is differentiable on open interval we have written. F dash of 0 equal to f of pi we got. That's why we have done Rolle's theorem. Now, when we find f dash of c, and take it that step, you have to go through it. When we differentiate, sin x becomes, we have written cos c. Sin 2x, I think we have written cos 2x. That is a 2 cos 2c. Clear? Clear. 2 cos 2c. When I have done the same question in next batch, so I got a different result. Now you have to check it. So cos c minus 2 cos c. It is entirely different answer. Then you have to do one thing. It becomes a 2 cos 2c minus cos c equal to 0. Then you make it a quadratic equation. That is 2 cos square c minus 1 minus cos c equal to 0. Or otherwise, we will get 4 cos square c minus cos c and then minus 2 equal to 0. Now you have to find the value of cos c becomes minus b plus or minus that under root of formula. Minus b means 1 plus or minus under root of b square minus 4ac, I hope so. B square 1 plus 4ac 16 plus 2. 16 into 2, 32. The whole upon we will get 8. Okay, fine. So cos c equal to c is equal to, we are getting here cos inverse of 1 plus or minus under root of 33, the whole upon 8. 0 to pi, that means second quadrant, cos value negative b including, positive b including. So you have to write, hence which belongs to, you have to write, that we cannot even verify 0 to pi. So hence Rolle's theorem is, Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem is verified when c is equal to. Are you clear, beta? When c is equal to. So we did not write there 2 cos 2 sin 2x. We have differentiated directly cos 2c into differentiation of 2x, that we will get to. This step we did not write, make correction of that step. So when c is equal to, write the entire answer cos inverse of 1 plus or minus under root of 33 upon 8. Are you clear, beta? Are you clear? Hello? Yes? Beta, are you able to understand what I am saying here? What I did, which question I did? Yes, no, beta. Yes, no. Yes. Make it correction of that question. Nobody say that cos 2 sin 2x differentiation is 2 cos 2c. Nobody. Why? When I was doing that same question in next batch, I was getting different answer. So please do it correction, because this is one of the repeated questions. This one clear? I hope so, beta. You have done your homework. Now anyhow, take it miscellaneous. The remaining questions let us do. Beta, next week most probably I will change time, because you know about it. I'm doing evaluation of that is our school is a center. I'm acting as a CNS, so I have to be there at 8 o'clock next week, whole week. So maybe I will change your timing. So let you know on Sunday. I will send a message on Sunday. Clear to you? Now see, beta. Now take your exercise, miscellaneous. Once again, I'm repeating the same question. Question number 15. Let me do it. Question number 15. That is x minus a ka whole square plus y minus b ka whole square equal to c square. We have to find the value of, prove that 1 plus dy by, not find the value, prove that d square y by dx square whole power 3 by 2 whole upon d square y by dx square is independent of a and b. Is a constant independent of a and b. मतलब constant आना चाहिए result में, but a and b result में नहीं होना चाहिए. That is question. Now anyhow, yesterday I explained you even then. First I am finding numerator, then denominator I will find out. For this purpose, we have to find the first differentiation, dy by dx. So now dy by dx, what I told you, 2 into x minus a, 2 into x minus a plus 2 into y minus b into dy by
dx equal to c square, differentiation is 0. So we are getting x minus a 2c. If I divide through to 2, then we will get underwriting directly d by dx is equal to minus x minus a the whole upon y minus b. Don't operate this minus inside, take it that is equation number 2. Now first you find out, before finding second derivative, find out numerator. So we need dy by dx ka whole square. So do squaring on both sides. So we will get it x minus a ka whole square the whole upon y minus b ka whole square. Now we need as per numerator 1 plus dy by dx ka whole square. Now that is equal to, if I do 1 plus x minus a ka whole square the whole upon y minus b ka whole square. So that is equal to, we will get it x minus a ka whole square plus y minus b ka whole square the whole upon y minus b ka whole square. Now the numerator result is what we will get it with as c square. So that is, we are getting 1 plus dy by dx ka whole square, that is equal to, this numerator is c square. So c square upon y minus b ka whole square. So I can write c upon y minus b ka whole square. Now as per question, we need numerators whole power 3 by 2. So I am taking both sides whole power 3 by 2. So if I take whole power 3 by 2, that is equal to c upon y minus b ka whole square whole power 3 by 2. Now 2 cancel, we are getting final answer. Numerator is y minus c cube upon y minus b ka whole cube. So this is numerator. Now let us find the denominator second derivative. We have first derivative, differentiate this one. So d square y by dx square, that is equal to, if I differentiate minus, keep it outside, denominator ka square y minus b ka whole square. Very carefully you have to do it. Keep denominator as a constant, numerator differentiation is 1, okay, x minus a. Now minus, keep numerator as a constant, denominator differentiation y minus b. B is 0 but y is dy by dx, we will get it. Now we know value of dy by dx, now substitute, that is equal to minus. We will get it y minus b minus x minus a into dy by dx value we have, that is minus we will get it plus here. So that is x minus a the whole upon y minus b. I replaced here dy by dx value the whole upon y minus b ka whole square. If I simplify this, take it LCM, so we will get it, this one is x minus a ka whole square, and if I take it here, this is minus we have outside beta, plus y minus b ka whole square the whole upon this y minus b comes to denominator, we will get it y minus b ka whole cube. Now see what is numerator, d square y by dx square equal to, numerator we will get it minus c square, I hope so. Given function we got, that is minus c square upon y minus b ka whole cube. That is equation number 2 here. So already we have 1, this is 2, this is 3. Now see 2 and 3, we got numerator and denominator. Now I am taking entire term. Numerator is 1 plus dy by dx ka whole square whole power 3 by 2. The whole upon denominator is d square y by dx square, that is equal to, what is numerator result with a? Numerator result is, we have c cube upon that is y minus b ka whole cube into, take it as reciprocal. If you take reciprocal, we will get y minus b ka whole cube the whole upon minus c square. It will be cancelled. We will get minus c. So we have proved the entire result is independent of a and b, is a constant independent of a and b. Now आपकी जो solution है, जो आपके answer है, उसमें ये भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक constant आना चाहिए. C is a constant आ गया, ये भी constant है, लेकिन उसको eliminate करने के लिए बोल रहे, हटा दिया हमने. बेटा समझ आया? Yes. Write down बेटा, fast, hurry up. क्योंकि I have written some extra questions and then homework. Write fast, थोड़ा जल्दी कर लेना, so that आज wind up करने इसको.
Right fast everybody. Ma'am, done. Yes. Everybody have done better? If you say yes, no, then only I can proceed. Every time I'm asking, I'm not asking single student. Yes, better? Yes. Yes, ma'am. Yes. Now listen, next to question number 16, another most important question, one of the repeated question better this one. Now take the 16th question. Now listen, this here what they have given dy by dx is equal to cos square a plus y upon square कब आता है बेटा? जब तक quotient rule नहीं लगाओगे, जब तक square तो आता ही नहीं है. So इसका मतलब ये square का मतलब ये term denominator में होगा तभी तो मैं quotient rule लगा सकती हूँ. So what I am doing here, little bit modification. X is equal to what I am doing cos y upon cos a plus y. अब डिफरेंशिएट करूंगी वही dy by dx ही निकालूंगी, बट आई नीड cos स्क्वायर. cos स्क्वायर कहां से आएगा? जब तक क्वेश्चन टू लगाऊंगी तभी. अब डिफरेंशिएट करूंगी, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 दैट इज इक्वल टू हियर क्वेश्चन टू लगाओगे, सो cos स्क्वायर a plus y. नाउ कीप इट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कांस्टेंट cos a plus y into differentiation of sin y, cos y minus sin y into dy by dx. Now next we will get here. Now minus numerator, keep numerator is a constant, denominator differentiation minus, so plus we will get sin a plus y into differentiation of a plus y, we will get it dy by dx. Are you clear what I did? Now I am taking dy by dx common, and then cos square I am taking this side, so cos square a plus y, that is equal to, if I take dy by dx is common, we will get it, so dy by dx, if I take here sin a plus y into cos y, and then here we have minus cos a plus y into what we have, sin y. Now I have taken denominator to this side. What is the formula beta? Sin a cos b minus cos a sin b. What we will get formula? Bolo, jaldi bolo. dy by dx into sin a cos b minus cos a sin b. What is the formula? Sin a minus b. Yes, sin a minus b. Sin a minus b. Sin a minus b. Yes, exactly better. Now y cancel. We have only sin a. So I am taking sin a to this side. So final answer we have dy by dx is equal to cos square a plus y, the whole upon what we are getting sin a. So प्यार से रिजल्ट आए, लेकिन आपको टारगेट समझ आना चाहिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में स्क्वायर कभी भी नहीं आता है जब तक आप क्वेश्चन टू लगाओगे. इसका मतलब वो टर्म डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तभी ये रिजल्ट पॉसिबल होता है. आर यू क्लियर? इट इज सो सिंपल as usual की, but a little bit modification. बेटा क्वेश्चन नंबर 17 इज होमवर्क. सेम क्वेश्चन में कर रही हूँ आपको. इन टर्म्स ऑफ थीटा किया है, यहाँ पे पैरामीटर t दे रखा है, सो आप निकालोगे क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन. सो 17 को होमवर्क करना, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देना. ओके, सो वो क्वेश्चन मैंने बोला सो दैट में भी आता है sec क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा. कैन यू रिमेंबर? सेम क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपके पास sec क्यूब t अपॉन AT आएगा रिजल्ट. नाउ सी नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18. 18th क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का होल क्यूब. और अभी क्या दे रखा है? f ऑफ x एग्जिस्ट. एक्चुअली एग्जिस्ट का मतलब क्या है? डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, बट यहाँ पे मैं सिंपल तरीका से आपको करके दिखा रही हूँ. f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस का फर्स्ट यू हैव टू ओपन, सो माइनस वी विल गेट इट x क्यूब इफ x इज लेस देन 0. Positive x cube we will get it if x is greater than 0. This is r greater than or equal to 0. This is a definition of modulus function. अब आप ये काम करो, f dash of x निकालो. So f dash of x equal to modulus function का मतलब क्या है? आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए. आप देखते रहो, ये हो जाएगा बेटा -3x स्क्वायर if x is less than 0.
Now, if positive x cube, if x is greater than, that is 3x square. If I differentiate 3x square, x is greater than or equal to 0. Once again, do the second derivative, f2 dash of x, that is equal to, now if I keep here, differentiate this minus 6x, if x is less than 0, and then positive 6x, if x is greater than or equal to 0. अब देखिए बेटा, आप x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखो तो डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखोगी, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. एनी हाउ दोनों वैल्यू सेम आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव. So this implies you can write directly f2 dash of exist, f2 dash of exist at all real number, at all real number, real numbers. Are you clear? Okay, fine. So this is so simple question. Now next I am taking question number 19. Before taking 19, you first complete it, then I will take better. Fast hurry up. 19th question. बेटा थोड़ा fast करने पड़ेगा. Yes, beta. Yes. Now I'm taking question number 19. Beta, do fast, everybody. Question number 19. 19th question, d by dx of x power n equal to, we know the formula n into x power n minus 1. Now what they are saying, beta, for all using mathematical induction you have to prove. हम तो वैसे formula we know ये कहाँ से आए हैं. हमें आपने 11th में एक mathematical induction जो real formula होता है, real number formula n into n minus 1 by 2, sum of square of natural number n into n minus 1 into 2n minus 1 up to n minus 1 तक बोल रही हूँ, upon 6. ये सब इंडक्शन से आप लोगों ने वेरीफाई किया. अभी मैट्रिसेस में सम क्वेश्चंस किया था हमने इंडक्शन से. इसका मतलब जब भी एनफ स्टेटमेंट आता है तो इंडक्शन से हम कर सकते हैं. ये भी ऐसा कुछ नहीं है. अब इंडक्शन से यू हैव टू ब्रिंग दिस अ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन थ्रू नहीं है. चलो एनी हाउ. सो अब स्टेप नंबर 1 क्या बताया बेटा, d by dx आपकी भी n equal to 1 बोथ साइड. सो क्या आएगा, d by dx of x. I'm not at all using differentiation formula. So 1 into x power 1 minus 1, dx cancel, 1 anything power 0 is 1. So this implies that p1 is true. P1 is true. That means differentiation formula बिल्कुल use नहीं करना. So let n equal to, we are taking k. So this implies the d by dx of x power k, that is equal to what we will get, k into x power k minus 1. That is I'm taking equation number 1. With the help of this one, we have to prove k plus 1 is true. So to prove, I'm going to prove k plus 1 is a p, k plus 1 is true. Okay, fine. So what is the k plus 1? That is d by dx of x power k plus 1. That is equal to, if I replace here, that is equal to k into x power, replace k by k plus 1. So k plus 1 into x power k plus 1 minus 1. We will get it x power k आ जाएगा. ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है. सो प्रूफ करने के लिए आई एम टेकिंग एलएचएस d by dx of what is given here beta, kx power k plus 1. So we can break, you know how to prove it. So I'm using this x power k plus 1, I'm breaking into two parts, that is x power k into x. Okay, fine. Product rule is not a differentiation beta. जब आप differentiation formula use करते हो ना, तभी that means d by dx of x power n a power x formula, वो होता है differentiation. Product rule, one of the way to split this function into simplest form. So अब product rule use करूंगी, इसमें x रखूं, d by dx of मैं differentiation formula नहीं use कर रही यहाँ पे, ठीक है, प्लस x power k रखूं, इसको differentiate करूं, d by dx of क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. अब देख, इसकी जहां पे आप रिजल्ट रखे हुए हो, ये वाला रिजल्ट आप यहाँ पे रख सकते हो. So LHS implies, अच्छी तरह समझ लेना बेटा, LHS implies
Now this is equal to x into d by dx of x power k की जहां से ये बड़ा रिजल्ट यूज कर रही हूँ, that is k into x power k minus 1. Now यहाँ पे dx कैंसिल, so क्या आ जाएगा x power k. इधर देख, अभी तक मैंने कहीं पे भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यूज नहीं किया. बेस से मैं पावर को ऐड करूंगी x power k, ये तो as it is रहेगा x power k. If I take x power k is common, you will get it k plus 1. Now see, ये रिजल्ट चाहिए लेकर आगे. Therefore pk plus 1 is true. pk plus 1 is true wherever pk is true, wherever proper statement होना चाहिए. So pk is true. Hence by pmi, I told you proper statement I required. Hence by pmi, given statement is true. Given statement is true. Is true for all n belongs to n. ये होता है आपका इंडक्शन के थ्रू ये क्वेश्चन करना होता है. Next I am taking beta. See, next one simple question. That's one, leave it. Now next I am taking question number 20. 20 what they are saying. 28th question देखना. Cos a plus b equal to, not cos a plus b, sin a plus b equal to what they are saying, that is equal to sin a cos b and then plus cos a sin b. Now what they are saying, for all and the differentiation, obtain the sum formula for cosines. मतलब आप कोसाइन का फॉर्मूला निकालना है. मतलब cos a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b. फॉर्मूला इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? कोसाइन फॉर्मूला, मतलब cos फॉर्मूला लेकर आना है. वो नेक्स्ट कराती हूँ. पहले ये लिखो, फास्ट लिखो बेटा. Write down fast everybody. Ma'am, done. Yes, everybody have done it. Yes. अब आपको दोनों साइड डन बेटा. Yes, ma'am. कोई बाकी स्टूडेंट नहीं बोल रहे बेटा. Now anyhow हम LHS RHS अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं. सबसे पहले otherwise if you want to take it directly, you have to take it direct d by dx of sin a plus b. That is equal to what you will get it. That is equal to d by dx of sin a cos b and then plus cos a sin b. Okay, now if I have done, I can erase it. Yes. यस नो भी नहीं बोलते हैं यार. यस नो भी बोलने में इन बच्चों की प्रॉब्लम है. Yes, ma'am. Yes. Now listen. अब I'm taking both side differentiation. With the help of differentiation, we should bring the result cosine formula. Now listen. First LHS differentiation, cos a plus b into differentiation of a plus b, dA by db and then plus db by dA by dx. And then dB by dx. Okay, with respect to x, I am differentiating here. Product rule. First, keep sin a constant, cos b minus sin b minus keep separate minus sin b into dB by dx, and then plus which one is constant? Cos b constant, sin a differentiation into cos a. Sin a differentiation is cos a into dA by dx. Now same thing here. Product rule plus. If I use the product rule here, cos a constant, sin b differentiation is cos b into dB by dx, and then plus. If I keep cos a constant, sin cos a, which one? Here I kept sin b constant, and cos a differentiation is minus sin a into dA by dx. Now listen better. This side what I am doing, I am collecting dA by dx common. dA by dx, if I take cos a cos b, and then here we have one thing minus sin a sin b. Okay, fine. Sin a sin b,
And then if I take dB by dx, we have here one term, first write positive term cos A cos B, and then here we have minus sin A sin B, okay, sin A sin B. So now I think so दोनों term में cos A cos B and then minus sin A sin B is a common. So if I take out, now here we have dA by dx, here we have dB by dx. Okay, now left hand side we have cos A plus B into what we have dA by dx and then plus dB by dx. Now listen, both sides this will be cancelled. Okay, fine. Now what we are getting, cos A plus B, that is equal to, have we got the formula better? Cos A cos B, yes, minus this is formula, clear. So through differentiation we brought a formula from sin A plus B to cos A plus B. Write down fast, hurry up. Better write down. Actually, I want to do some extra questions. Let us see. Do fast, everybody. Ma'am, done. Yes. Yes, but everybody have done? Yes, ma'am. Yes. Now listen better, question number 22, 23. Then I will do some extra question. तभी आपको example question homework में दूंगी. पहले extra question करने पड़ेगा. Now let me first do question number 22. 21 is a simple example question, leave it. Now 22, y equal to what they have given here. That is f of x and g of x and then h of x. And then here we will have given element and then next they are saying ABC. Okay, fine. Now we have to show dy by dx equal to something they have given. Now anyhow, listen better, dy by dx. Here there are three lines and this is U, this is V, this is W. That is a product rule like. You cannot differentiate at a time in all rows, all columns. You can differentiate any single row or single column. This is a determinant. Okay, fine. Now suppose if I keep second row, third row constant, if I differentiate first for f dash of x plus g dash of x, plus where I'm getting f dash of x and g dash of x and this one is h dash of x. Now this is I'm keeping constant element and then this is also constant ABC plus if I do second line differentiation, first line I'm keeping constant f of x, h of x, g of x and then h of x. Second row, if I differentiate, that is a constant, we will get it as 0, 0, 0. And then plus, if I keep first two rows constant, f of x, g of x, and then h of x, and the next one comes element, I am keeping constant, ABC, if I differentiate, 0, 0, 0. What I told you better, first row differentiate here, another two rows go constant रखा, plus first row constant रखा, third row constant रखा, second row को differentiate किया because वो constant 0 हो गया. Similarly, first two rows को constant रखा, third row को differentiate किया. So if any row or any column, all elements are 0, the value of determinant is 0. ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. Final result आएगा ये फ्लैट. ये भी बोर्ड में 4 मार्क क्वेश्चन में आए बेटा. ऐसे क्वेश्चन देखने में कुछ है ही नहीं, लेकिन स्टेप प्रॉपर आपको प्रेजेंट करने पड़ेगा. Element and then ABC. Are you clear this one? Now see the last question, one of the most important questions. ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आए वो जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी तब करके दिखाऊंगी. Y equal to what is given here, e power a cos inverse x. Beta, this is a repeated 6 mark question, not 4, 6. Now listen, anyhow, dy by dx first, let us find dy by dx. Ex का differentiation ex into differentiation of a cos inverse x minus a upon under root of 1 minus x square. What I told you, try to avoid quotient rule. So take this term to the side, 1 minus x square into dy by dx, that is equal to minus a into e power a cos inverse x.
Either if you want to continuously differentiate, you can differentiate. Now, if you want to write here y, you can write it y. So that is up to your choice. Now, if I differentiate this one, 1 minus x square, first derivative d square y by dx square is the second derivative. If I keep this one as a constant dy by dx, very carefully you have to do under root 1 upon 2 into under root of 1 minus x square into differentiation of 1 minus x square minus 2x. Are you clear? Equal to minus a is a constant. Again, we are differentiating e power a cos inverse x. So minus a e power a cos inverse x into differentiation of a cos inverse x. Again, we will get it minus a upon under root of 1 minus x square. Now I am taking under root of 1, bus differentiation हो चुका है. Now I am taking under root of 1 minus x square this side. So 1 minus x square into d square y by dx square multiply कर रही हूँ, 2 cancel. Now under root cancel. So we will get it plus x into dy by dx. That is equal to this. ये क्या हो जाएगा? A square into e power a cos inverse x. So e power a cos inverse x की जहाँ से if I replace y 1 minus x square into d square y by dx square plus x into dy by dx minus this is y हो जाएगा, ये y इधर साइड आएगा minus a square y equal to 0. बेटा ये 6 मार्क क्वेश्चन में आया है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं. समझ आए बेटा? समझ आए? बोलो, राइट डाउन फास्ट हरे. अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करती हूँ पहले. अभी 2 डेज आपको ये टाइम दे रही हूँ. मंडे कोई बात नहीं, मंडे दे दूंगी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन. अभी कितने मेरे से हो पाएगा वो ही नहीं पता है. सो फर्स्ट आई विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देन आई कैन गिव यू होमवर्क. अब रेस्ट tomorrow and day after tomorrow you sit the complete thoroughly go through this differentiation. First formula you learn it, then start do exercise wise, otherwise it is quite difficult beta. You need a lot of practice in this chapter. Write down fast. I will do some extra questions. I am done. Everybody have done better? Let them do it. Yes. Yes, बेटा. Time running है बच्चे. Yes, I'm done. Yes, मैं बाकी बच्चे कोई बोले तभी तो है बेटा, फिर बाद में बोलेंगे आपने इरेज कर दिया. I never erase without asking. Be alert, everyone. Tadu. Okay, now see next. I'm taking some extra questions. Beta, question number 1. You should know how to bring the function. अभी तक हमने कितने भी क्वेश्चंस किया, ऐसा नहीं है डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज कर लिया. सबसे पहले फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए. सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए सबसे पहले हमने देखा ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाउ टू ब्रिंग द फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. फिर यूजिंग लॉग कैसे सिंप्लीफाई किया और पैरामेट्रिक फॉर्म से कैसे उसको डिफरेंशिएट किया ये देखा था. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे हमने डिफरेंशिएट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के बाद. उसके बाद हर टॉपिक में मैक्सिमम हम यही देख रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर आना है. ये भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ क्या दे रखा है आपके पास x, and so you should know the substitution, suitable substitution to bring the function into simplest form. आपको देख के पता चल रहा है साइन इनवर्स. You should try to
avoid this sin inverse. So for that you have to give suitable substitution so that we will get the formula in terms of sin. आप direct differentiate करोगे, it is quite difficult for you. So यहाँ पे क्या substitution आपको इधर देख बेटा, sometimes यहाँ पे x square आ सकता है, यहाँ x power 4 आ सकता है. आप इसमें एक टिप्स दूंगी, इसी तरह क्वेश्चन आता है जो बाहर जो टर्म है ना that इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन दो, sin a दो, ये जो रूट x है ना that इज इक्वल टू sin b देना. वंस अगेन मैंने क्या बोला, जो बाहर टर्म है वो अपने आप फॉर्मूला मॉडिफाई होगा. इधर देख, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x एंड देन हियर b इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स रूट x हो जाएगा. इफ आई सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू sin इनवर्स, अब कैसे मैं सब्स्टिट्यूशन दे रही हूँ वो देखना. इसी x की जगह से sin a रख रही हूँ, अंडर रूट ऑफ इधर देख अंदर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा तभी तो कॉस ए फॉर्मूला आएगा. इसको स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करना, क्योंकि साइन यहाँ साइन रखने से कोई फॉर्मूला तो नहीं बनेगा. इसको स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करोगे 1 माइनस इसी एक्स की जगह से क्या लिखोगे साइन स्क्वायर बी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. माइनस इसी रूट एक्स की जगह से यही रखो, फिर आपको चाहिए कॉस बी तभी तो फॉर्मूला बनेगा. इसका स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करो, मतलब एक्स का वैल्यू डायरेक्ट रखो, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ये हो जाएगा. समझ आया क्या बताया? सो ये टिप्स आपको सीखने पड़ेगा. ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस वो हो जाएगा कॉस ए एंड देन साइन बी. नाउ फॉर्मूला बन गया, जो व्हाटएवर आपका टारगेट वो आ गया. साइन ये हो जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी. नाउ साइन इनवर्स साइन कैंसल, a माइनस बी. a वैल्यू वी हैव दैट इज साइन इनवर्स x एंड b वैल्यू वी हैव साइन इनवर्स रूट x. नाउ वी नीड डिफरेंशिएशन dy by dx. ये प्रूव दैट रिजल्ट में भी आता है बेटा. अब डिफरेंशिएशन यूज कर रही हूँ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स रूट x 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1 by 2 रूट x. बहुत ध्यान से करने पड़ेगा. सो द फाइनल आंसर dy by dx is equal to 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. मैंने बोला ये प्रूव दैट रिजल्ट में आता है. ये हो जाएगा x हो जाएगा, सो 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x, ये x है बेटा, अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ ये क्या है फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है ना, रूट x का होल स्क्वायर. बहुत ध्यान से लिखो. सो ये रूट x को अंदर लेना तो ले सकते हैं, वो आपका चॉइस है बेटा. ये ऐसे प्रूव दैट में आता है माइंडेड. बात समझ में आए? बोलो यस नो, बोलो फटाफट. यस बेटा, यस. नाउ सी अनदर क्वेश्चन बेटा, ये इसी टाइप का क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी. एक और क्वेश्चन कर रही हूँ, बस इतना है. कॉस इनवर्स 3x प्लस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर द होल अपॉन 5. अब कितने भी क्वेश्चंस दूंगी वो एनसीईआरटी बियॉन्ड दूंगी तो सो दैट आपको समझ आ जाए. अब ये देखो, इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे सो तभी आपको इजी रहेगा. डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. अब क्या सब्स्टिट्यूशन देना है, कैसे देना है, इसको बोलते हैं बेटा पोलर फॉर्म. इसको क्या करना है आपको, 3/5x करो. देखो क्वेश्चन तो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है ना. 4 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. अब क्या सब्स्टिट्यूशन देना है आप क्वेश्चन x इज इक्वल टू, देखो मैं साइन थीटा दे रही हूँ. x इज इक्वल टू साइन थीटा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x. अब 3/5 को आप लेके देखो, साइन ये देखो इंप्लाइज राइट एंगल ट्रायंगल जाओ, 100% कॉस ए का वैल्यू आएगा 4/5. इधर देखने बेटा, ये साइन ये वो, ये कॉस ए बनेगा ही बनेगा. राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ, सब्स्टिट्यूट करके देखो, यू विल गेट आंसर. सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन ए एंड देन ये होगा साइन थीटा एंड देन प्लस ये हमने सब्स्टिट्यूशन दिया कॉस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. बेटा डायरेक्ट लिखो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. So cos inverse of we have formula cos a minus theta, cos a minus theta that is equal to a minus theta. So y equal to, अब ये का वैल्यू यहाँ से कॉमन निकालना है. ये काम करने बेटे tan a का वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, यहाँ से, इसलिए tan a वैल्यू निकालो. tan a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4. अब देखो a का वैल्यू तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x हो जाएगा. अब डिफरेंशिएट करोगे बेटा dy by dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. सो फाइनल आंसर इज -1 अपॉन. समझ आए बेटा? यस नो, टाइम ऑफ. हेलो हाँ बेटा, अच्छा